So Okay. yeah, All right. that was So one of the I think reason. that is okay. So I think one a good thing which you're mentioning that it started few years back only. Yeah, So it started from somewhere around 2020 or 21. Okay. yeah, major boom came up during the Major COVID. time. Hmm. Okay. So we are in the everyone please understand that this is a there is always a growth curve of any particular industry, and as you know that there is a S kind of curve that happens for every industry, right? So this is in the upcoming trend, right? Last 4 years this industry has now started growing. And then if you see coming years, as we were discussing in the morning, there are a lot of companies who have been establishing their centers for fund accounting, right? तो ये एक ऐसा रोल है जिसमें आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटीज काफी आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। यस। और उसके दो तीन रीजंस हैं। एक रीजन जैसे अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, टेक्निकल डिस्कशन भी। आप लोग देखोगे कि इसमें इतना इजी नहीं है जैसे अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग में आप डेबिट क्रेडिट सीखते हो, समझ लेते हो, राइट? ये फंड की अकाउंटिंग है। तो फंड अकाउंटिंग हम लोगों को, अगर आप देखोगे किसी से बात करोगे तो आप देखोगे कि किसी को फंड की स्पेसिफिक अकाउंटिंग नहीं आती है। आप लोग भी आर्टिकलशिप में जाते थे तो किसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म को ऑडिट करते थे, किसी सर्विस इंडस्ट्री को ऑडिट करते थे। लेकिन आपने कभी म्यूचुअल फंड का ऑडिट किया है क्या? कितने लोग हैं क्लास में जिन्होंने म्यूचुअल फंड का ऑडिट किया हो, कोई बता सकते हैं? एनीवन? किसी म्यूचुअल फंड का ऑडिट किया हो या किसी हेज फंड का ऑडिट किया हो आपने? ऐसा ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी किसी को मिली है? तो ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी को भी नहीं मिली है, राइट? तो ये ही आपके लिए प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिलती है। तो जब इंटरव्यूज हम देखते हैं तो इंटरव्यूज में यही कॉम्प्लेक्सिटी लोगों को लोग फेस करते हैं। राइट? किसी को नहीं आता है। तो आप लोग थोड़ा भी अगर इस चीज को अच्छे से समझ के जाओगे तो देखोगे कि जैसे इन्होंने बताया कि यूएस वाज यूएस वाज लुकिंग फॉर अ राइट पार्टनर। पहले चाइना को उन्होंने प्रेफर किया था, इंडिया को अब उन्होंने प्रेफर प्रेफर किया है। तो जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, राइट, सभी टॉप कंपनीज कहीं ना कहीं फंड अकाउंटिंग में इन्वॉल्व है। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ फॉरेन बैंक्स आल्सो। आई हैव हर्ड जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, ऐसी भी काफी कंपनीज है जिन लोगों की फंड अकाउंटिंग हाउसेस है। तो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो आई एम श्योर कि ये बात क्लियर। तो थोड़ा सा इफ यू कैन टेल टेल द स्ट्रक्चर के मतलब थोड़ा बेसिक से कि दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज डन इन दिस पर्टिकुलर एरिया। Sure, Gunjan sir. So basically, I would like to first start with the industrial background. Okay, the industry to which we belong, which we are talking about, is the wealth and asset management industry. Okay, which is like the acronym is WAM sector. Okay, so what Okay. this industry is all about, basically, there are like three or four major players in this industry, uh, such as like mutual funds, hedge funds, private equity, REIT, REIT, investments, investment trust, etc., etc. So basically, what does this asset management company does is these are called also called as fund houses. Okay, so what happened is that at a general level, at retail level, we haven't seen that the people don't have that much first knowledge. Secondly, the fund, you know, knowledge to invest in the market, the quantum of fund to create an impact in the market. Okay. As a general, as a CA or an MBA student, you must have, I'm sure some of you might have the Demat account. Okay. During the COVID era, there was a boom in the Demat thing. Okay. Right. So, you guys must be aware about the operators. Okay, we have heard about operators like how they impact the market, how they create market. Okay, it's not that one or two retail investors, create an emphasis. There are like you must have heard about FDIs, FIIs. Okay, how FIIs impact their market. So how does this FIIs does that? So they are like through this WAM sector, they are through mutual fund, hedge fund, private equity, REIT. Okay, so that they are having like I would say, like we are having an investment managers of name State Street. Okay, it is a $4.7 trillion account. Okay, so that's the quantum we are talking about, okay, of this sector. And this is one of those. We are having like Goldman Sachs, JP Morgan, okay, the biggest fund house is BlackRock,
If you guys must have aware about BlackRock, Blackstone. Hmm. Okay, so these are the few names which are quite, we have only heard the name of this, but digging deep into how they work and how their financials work, like how do these guys prepare their financials, is that something which we in GT we take care about. Okay, like how this fund prepares their financial statements. But as a general, how is it now coming to the question that how it is different from normal financial statement preparation. Okay, first of all, let me tell you, irrespective of the industry, accounting is never different. Okay, it is basic to say we will prepare, we will be having our three golden rules of accounts, we will be having journal entry, we will be having ledger, we will be having trial balance, and from trial balance we will be preparing financial statements, and we will be giving dual impact of adjustments to the financial statements. Okay, and then we will be having our ratio analysis. So the basic schema of accounting across the globe is same. The only impact is about the industry specific terminologies, what we have. Okay. For example, you must be aware about the operating cost in a general Indian normal company, say for example, a trading company. Operating cost may be with regard to like, running a shop, purchase and sale of goods. Okay, operating expenses might be electricity and general freight inwards. Okay, all those things. But when we talk about specific to the industry level, okay, their operating cost changes. Okay, their operating cost is with regard to their admin fees, their management fees. How do they operate the funds? What is the cost which is to now, this cost is specific to the capital market, what we talk about. Okay. So, So, sorry to interrupt, yeah. JJ. I think I can simply draw them a simple chart so that they Yeah, can sure. primarily understand what we are actually when we are talking about expenses. I think that is something Hmm. which they will be better able to understand. So, let me explain like what JJ has explained, right? So, primarily, what he's saying that there is a pool of fund, right? This pool is called as fund, right? And these funds, as is mentioned, that it is like top funds. For example, he talked about Blackstone. Okay, I think this is one of the largest fund house. Yeah. Okay, so this is having a corpus of almost 4.7 trillion dollar. Okay, so just to give you a context, India's economy is $4 trillion, right? Everyone, please understand, right? India की जो इकोनॉमी है उससे भी बड़ा जो कॉर्पस है दैट इज देयर. ओके, तो आप समझ सकते हो इस चीज को. अभी ये जो फंड्स हैं दे आर इन्वेस्टिंग इन लॉट ऑफ असेट्स, राइट? अलग अलग जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट्स, दे आर इन्वेस्टिंग इन डेरिवेटिव मार्केट्स, दे आर इन्वेस्टिंग इन maybe currency market and Correct. all across a lot of this thing unlisted entities को भी खरीदते हैं, तो पैसा है तो they are investing everywhere. What the fund reporting houses are doing is they are primarily accounting for these for these funds. Am I right, JJ? Yeah. So Yeah. Just a minor change, sir. It is yeah, not for the Blackstone, it is for the Street Street. ah, The biggest fund house is BlackRock, which has BlackRock, asset ah, under management around 13.5 trillion. Yeah, dollar. 30.5, 13, 1 3, 13. 13, okay, Yeah, 13.5. 13.5 trillion dollar. Okay, so that's huge, right? So Yeah. उसके लिए they of course need people who can account for them, who can report their profit and loss and related things. So that's what we are right now discussing. So I hope everyone has got the context clear कि एक fund है, वो fund invest कर रहे हैं market में and at a various fund reporting profile. What you have to do is you have to understand that how to account for these funds reporting, इसको report कैसे करना है, account for कैसे करना है, right? So this is primarily uh, so when we are talking about the fund reporting, so first you have to understand that fund का revenue क्या है और fund की cost क्या है, right?
So when we are talking about funds, so if you can tell them the revenue structure of the funds, like how they make money. Sure, sir. Sure, sir. So basically, for understanding the revenue, we need to understand the asset, like the balance sheet criteria. So Yeah. the primarily the balance sheet of a fund looks like is investment in capital market. Okay. Oh, Now, as per a general like a chartered accountant and MBA student, we understand about debt and equity. Okay. Either you invest in debt fund or you invest in equity fund. Okay. From equity, what you gain is dividend. From debt, you gain is interest. Okay. So the primarily two sources of my income will be dividend income, interest income. Thirdly, the major source of income will be realized gain and loss because I will be having certain holdings and I will sell them out to generate gain. Okay, so those will be realized gain and loss. Okay, and we have certain other minor incomes which we generally classify as other income, immaterial kind of thing. But right. primarily, the three source of my income from these investments are dividend income, interest income, and realized gain and loss. All right. Well, so please note this down, everyone. क्योंकि अगर आप लोगों का कभी फंड फंड अकाउंटिंग के लिए अगर आप जाते हो तो ये एक मेजर सवाल होता है कि जो फंड्स की बैलेंस शीट होती है वो कैसे दिखती है. सो फंड्स की बैलेंस शीट में एज इज मेंशन दैट मैंने इसको सिंपल टी फॉर्मेट में रखा है, राइट, Hmm. लाइबिलिटी असेट्स को. सो असेट्स बेसिकली आर इन्वेस्टमेंट्स वेयर दे इन्वेस्ट, राइट. दैट्स देयर असेट्स, राइट. दे डू नॉट हैव लाइक प्लांट मशीनरी ऑन ऑल दैट. वो तो थोड़े बहुत होते होंगे जो They outsource फर्नीचर it. फिक्सचर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट. लेकिन जो Yeah, मेजर असेट है दैट इज द इन्वेस्टमेंट्स. यही इनकी असेट्स है, यही इनको इनकम जनरेट करके दे रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इनकम, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, सॉरी, interest income. Yeah. right. So just remember this part. And now you people have to have a good understanding of key how the interest and the dividend and if they are having any investment, right, कोई investment है और उसको उन्होंने सेल करा है, तो उस इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे आप क्या एंट्रीज पास करेंगे, हाउ विल यू रिकॉर्ड फॉर दैट. ओके. Yeah. तो इस स्टेज पे आई थिंक वन गुड थिंग वुड बी इफ वी कैन आस्क अ क्वेश्चन टू द ऑडियंस, राइट. एक Exactly. क्वेश्चन अगर हम लोग पूछते हैं तो समझ आ जाएगा कि what are they able to understand this part or Hmm. not, right. So if let's say a company has if the company जिस जिस जो आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट करा है उस कंपनी ने शेयर्स को बायबैक करा है, यस. तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ दैट बायबैक? यस, तो बता सकते हैं व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ बायबैक? सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस. ये तो आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो? जो कंपनी जिस कंपनी ने बायबैक करा है, करेक्ट है. करेक्ट. अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फंड क्या करेगा जिसने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे? सर उसमें दो चीजें, कभी फंड बायबैक में पार्टिसिपेट कर रहा है और नहीं हाँ, कर रहा है. और उसमें भी फंड तो अज्यूमिंग दे आर पार्टिसिपेटिंग. सो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, राइट. यस. सो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है एज ही हैज मेंशन्ड, राइट. इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स जितना हम उसको सोचते हैं, राइट. आप सिंपल टर्म्स में सोचोगे तो इट इज सिंपल. यस, बैंक अकाउंट, उनको पैसा आया, शेयर्स उन्होंने बेच दिए. अब कॉम्प्लेक्सिटी आती है जब आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस बुक करोगे, राइट. बट दैट्स अ डेफिनेटली टेक्निकल डिस्कशन, हम लोग बाद में करेंगे. लेकिन यू अंडरस्टूड दैट दिस इज द बेसिक अकाउंटिंग विच इज ऑल अबाउट. You just have to put your logics at right place. Okay, good job, Harsh. Good answer. So, Jide, you have any questions related to that? Yeah, I have a question to the team. Yes. Is that can anyone tell me what is the difference between realized gain versus unrealized gain? सो इफ आई हैव अ पोजीशन इन डेरिवेटिव्स और कैश Hmm. इन्वेस्टमेंट्स, एंड इफ आई सेल, देन आई विल कैटेगराइज इट एज रियलाइज्ड प्रॉफिट्स.
And if it is showing profit, suppose I have shares worth rupees 1 lakh and the market value is 1,50,000, then the unrealized profit and loss will be 50,000 rupees. Okay, great answer. So in this thing, first of all, your answer is absolutely correct. And by this answer, we can say that we have got about two things. First, the differentiating criteria of a realized gain and unrealized gain is the sale. Sale is what triggered the unrealized gain to the realized gain. Okay. Secondly, it's about you must have learned in India's FVTPL. Okay, or fair value accounting. Okay, that means why are we having unrealized gain and loss? Because we are valuing our investment based on market value. Am I correct? That's what happened in our demat account. We are having daily gain or loss, unrealized gain and loss. How many of you have the demat account here? ओके, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द डेली, कि जनरल होता ना कि हमने भले ही हमने एक टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा है 500 रुपए में, पर डे एंड पे अगर वो 510 रुपए का भी हो गया, तो वो ग्रीन ट्रिगर जो होता है ना, वो बड़ा मजा आ ल्यूक्रेटिव जाता है लगता उससे। है कि हाँ, कि चलो कुछ पॉजिटिव गेन हुआ। ओके, सो जो डेली वो जो आप देखते हैं कि विदाउट यू नो सेटिंग ऑफ, विदाउट ट्रिगरिंग द सेल, तो जो आपका डे एंड पे जो पोजीशन होती है, दैट इज योर अनरियलाइज गेन एंड लॉस। ओके, बिकॉज सपोज यू हैव बॉट अ टाटा मोटर शेयर फॉर 400 रुपीज, एंड एट द डे एंड, या एग्जैक्टली, मार्क टू मार्केट गेन लॉस, या so if you are valuing your investment based on mark to market, you will be having that gain and loss. It will be called as unrealized gain and loss. But the moment you will trigger the sale, when you will make a position, at that time, the gain which you will be having, that will be a realized gain and loss. Okay. This is one thing which you clearly need to bifurcate and understand that, okay, what is our unrealized gain and loss and what is our realized gain and loss. Okay. So, if it is an unrealized gain, is there any difference that we will take it in FVTPL or FVTOCA? No, here we generally move both the realized gain and loss and unrealized gain and loss to the income statement. P&L, because that's their business, right? Yeah. Okay. Right, great. Okay, so yes, I think everyone understood this part, right? Where this industry, what this industry is all about, right? So everyone understood the balance sheet. Balance sheet is having normally the investments, right? और जब और liabilities किस तरह की होती है इसमें? Liabilities will be generally like we will be having the fund raised, that is the capital which we are Capital, having, yeah, yes, capital. or maybe if in case of unit capital, like we will be having unit holder in the mutual fund units, hedge fund units, what we will be raising that. Okay, so there will be unit holders capital. Okay. Okay. So broadly Secondly, capital. yeah, broadly capital. Secondly, we will be having certain external liabilities with regard to some kind of outstanding expenses. Okay, certain payables, like management fees payable, admin fees payable. That is whatever our expenses are outstanding, we will be making them as payable. Thirdly, with regard to asset, I want to add that some funds do like have certain like cash at bank, cash reserve with them just to, in case of emergency, they find that we will be having certain upcoming opportunity with us, so they can utilize those cash balance. Okay. Yeah. All right. Okay, great. So I think everyone understood the balance sheet part, right? So I'm just rubbing it off. Everyone note down, right? This is broadly the balance sheet which is there. Now talking about the income statement. Income statement, as you all understood, the revenues, the dividend, and investment, and the income from the investments and interest income, right? So your revenue. Now talking about the cost, right? This is something which you people have to understand. What is the cost? तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, राइट? अभी हमने केवल कैपिटल Yeah. इसलिए लिखा है कि मोस्टली कैपिटल होता है, अगर उन्होंने लोन लिया है तो Hmm. डेफिनेटली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी Long होंगी। term liabilities. Okay. यस। So So, the ideal way is to download a mutual fund balance sheet. आप लोग ये करो, that's an assignment for those who want to build their hmm. career. So please download a mutual fund house balance sheet P&L, आपको पूरी clarity आ जाएगी, right? And if possible, I will download it for you and then share it with you.
Yes. definitely. ओके सो यस सॉरी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द कॉस्ट? So with regard to cost, we need to understand that fund houses outsource majority of their operating operations. Okay, they don't ओके themselves, they won't themselves be having a office at rent. Okay, to carry out their operations. Okay, primarily the cost is with regard to they will be having an administrative. Okay, who will take care of all this. Like bookkeeping, okay, regular cost, operating cost, and everything. Secondly, these guys will be having a custodian, okay, who will be taking care of the physical, safeguarding of their asset. That is the what we are having share certificate and everything. Okay, because for obvious maker and checker rule, we everybody know that the person who is having the right to prepare books of accounts cannot have the physical possession of the asset. Okay, so just to have a segregation of duties, we are having an admin who will be taking care of regular expenses and preparing the books of accounts, and the custodian who will be having physical share of that asset. Thirdly, we will be having investment manager. Okay, you need an investment manager to make investment decisions ultimately, because that's our ultimate objective. Okay, what an ओके investment manager does is, and this might be a company also. Okay, this is not necessarily an individual. It can be a corporate house. It can be an LLP. Okay, it can be any of the. It can maybe a trust firm. Okay, so what does investment manager do? They manage the investments of the asset. Okay. They will be looking for constant opportunities in the market, that which market might be local market, might be global market. Okay. Where we have the most opportunity, and where in which which asset we need to invest. Like sometimes what happen is cryptocurrency suddenly becomes lucrative, that okay, there is a upcoming boom in the cryptocurrency. So let's be proactive and invest our certain funds into cryptocurrency, so that we can, at the time of boom, we can just capitalize those opportunity and make a position and get out of that. Okay. So this is the work of investment manager, to make investment decisions. Like the unit holder will invest their capital into the fund, but how that capital will be utilized, okay, that depends upon the investment manager. ऑल राइट और ये जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं दे बेसिकली बिकॉज दे आर मेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजन दे आर चार्जिंग अ फी फ्रॉम द from the company, right? They are charging a fee From the fund, yeah. from the fund. तो Hmm. वो फंड को बोलते हैं कि हमको इतना परसेंट, और ये जो फी चार्ज करते हैं परसेंट पे चार्ज करते हैं। और ये जैसे बोलते हैं कि लाइक हम लोगों के पास मान लो कि उनके पास 100 करोड़ का AUM, फंड है, asset under एयूएम management. है। इसके Hmm. लिए एक वर्ड और आप लोग नोट कर लो, एयूएम, असेट Hmm. अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट मतलब जितने का उनके पास जितना का फंड वो लोग मैनेज कर रहे हैं। Hmm. तो इसका एक परसेंटेज वो चार्ज करते हैं, टू मान लो 2% फीस है, Yeah, तो generally वो it's करते हैं। ranging from 1 to 2%. Yeah. राइट। तो जो आपने सुना है ना कि ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस में से जो हायरिंग होती है, राइट, IIM A IIM B C से, तो वो लोग क्या ज्वाइन करते हैं, तो आप देखोगे कि वो ज्वाइन एज अ इन्वेस्टमेंट मैनेजर यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट में बिकॉज दे आर मेकिंग दैट इन डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे आर चार्जिंग दिस काइंड ऑफ फीस। यस डेफिनेटली एकदम स्टार्टिंग में नहीं मिलता है ये वाला पैकेज, बट ओवर द इयर्स मिलता है। ठीक है, तो ये वो पोजीशन है। हम इस पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि दैट इज द कॉस्ट, राइट? ये कॉस्ट उस फंड को बियर करना पड़ती है। ठीक है, राइट। Yeah. सो दिस इज वन थिंग विच इज द कॉस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट फंड्स, राइट? तो ऐसे एक एंगल से देखो तो बहुत सिंपल है, दूसरे एंगल से देखो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो लगेगा आपको, क्योंकि हम लोग हमारे लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम किसी और के लिए यहाँ पर अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। ओके सो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। आई होप ब्रॉडली एवरी ऑल दीज थिंग्स शुड बी क्लियर। ओके, तो एक क्वेश्चन, एक्चुअली आई हैड दिस क्वेश्चन इन माय माइंड कि ऐसा बोलते हैं कि
अच्छा, ये जो इन्होंने बताया है कि फंड्स तीन टाइप के होते हैं ब्रॉडली। वन इज म्यूचुअल फंड, सेकंड वन इज हेज फंड, एंड थर्ड वन इज प्राइवेट इक्विटी फंड। Broadly, these are the categories, or is there any other? Yeah, there are certain like REIT funds, REITs are and also there there, are yes. certain, आजकल but चलता है। majorly we are having this three major player: mutual fund, hedge fund, and private equity. सो म्यूचुअल फंड तो आई थिंक सभी को पता है, ये सब लोग देखते हैं ऐड, म्यूचुअल फंड सही है, राइट? इक्विटी में डालना है पैसा, इक्विटी या डेट, या फिर बात कर लेते हैं कि उनके भी जो एरियाज हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, बट ब्रॉडली अगर आप इक्विटी और डेट देखते हो तो उसमें ये होता है। हेज फंड जो होता है बेसिकली, सो ऐसा बोलते हैं कि हेज फंड ज्यादा रिस्की होता है, टिकट साइज भी बड़ा होता है और रिटर्न भी ज्यादा देता है, लेकिन इनका मेजर एक्सपोजर कौन सी असेट्स में होता है? Any idea, guys? I guess one of the answer they've already mentioned in the question, like short selling. So I would like to add to this point. हम्म। Uh, like hedge funds generally invest in riskier asset. Okay. हम्म। अ, जब से हम फाइनेंस के फील्ड में घुसते हैं, एक टर्म है हम जो हमेशा सुनते आ रहे हैं: हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। ओके, हम्म। that stands throughout the finance terms. Okay, so what does this hedge funds do is they invest in the riskier asset, okay, which are primarily into derivatives, cryptocurrencies. Okay, डेरिवेटिव्स के लिए हमेशा एक कहा जाता है एक टर्म कि दो धारी तलवार होती है, डेरिवेटिव्स। ओके, सो बट जो ये हेज फंड्स होते हैं, दिस गाइस लव टू प्ले दैट रिस्की गेम। ओके, दे आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क टू जनरेट दोस एडिशनल रिटर्न for their investors. Okay. Secondly, coming to investors, the word I would like to introduce is the accredited investors. Okay. The high HNI is what we have talked about, those who invest in these funds. So those are called as accredited investors. There are certain limits with regard to regulatory requirement for by SEBI, US SEC. There is a limit where you can be classified as accredited investors. But yeah, those guys who invest in this kind of riskier assets in the like uh, hedge funds are generally known as accredited investors. Venture capitalists, what you talked about, like these guys are primarily for, private equity investments. Anyone of you heard the name of angel investors? Anyone? What do you mean by angel investor? बताइए, यस, व्हाट इज एंजल इन्वेस्टर? एनीवन? अनम्यूट करिए। सर एंजल इन्वेस्टर्स सीड राउंड में, आइडिया राउंड में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जो एंड गाइडेंस प्राइमरली करने कौन के सी लिए। टाइप की उसमें करते हैं बिजनेस में? सर एकदम यंग स्टार्टअप्स में या एंजल इन्वेस्टर। एग्जैक्टली, सो वाई स्टार्टअप। कॉम्बिनेटर। हम्म, या प्लीज कैरी ऑन। हाँ सर, एक फेमस नेम वाई कॉम्बिनेटर है, जो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को उन्होंने गाइडेंस और फंड्स दिए। हम्म, डेफिनेटली। और यार कम ऑन, शार्क टेक इंडिया। हम्म। शार्क क्या टैंक होता है अपना। शार्क टैक इंडिया में, क्या थे वो लोग? एनी आंसर? बोलिए बोलिए, यस, शार्क टैंक में वो जो बैठते हैं, यस, वो लोग कौन है? दे आर नॉट शार्क्स, राइट? शार्क नहीं है वो लोग। ओके, तो वो लोग बिजनेस को गाइड करते हैं, थ्रू करते हैं, वो एक बिजनेस थ्राइव करने में मदद, बूट स्ट्रैपिंग या द टर्म इन्वेस्टर्स है वो। ठीक है, फंड्स प्रोवाइड करते हैं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इन्वेस्ट इन आइडिया। यस शिवा, एब्सोल्युटली। ओके, अंडरस्टैंड द concept of making a the problem which needed to be cater. Okay, the problem is जिनके पास, उनके पास उसको उनके पास पैसा इन्वेस्ट करने का दिमाग है, उनके पास पैसा नहीं। सो दिस
go hand in hand. दिमाग है. So mutual fund, hedge funds, private equity, they come as an intermediate. Okay, they connect this to people and of it. Fund providers about small investors. तो ये क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हैं ताकि दे क्रिएट अ पूल एंड मेक एन इन द मार्केट. सो Okay, ये चीजें. sorry, JJ. Am I is the problem is from my side or because there is some audio issue? किसी और को भी आ हेलो, रहा है क्या? एम आई क्लियरली ऑडिबल? Anyone please confirm? यस सर. ओके. Okay. Sorry, ओके. so there may be ओके. problem from my side. Okay, ओके. sorry. No worries, I can repeat on. Hmm. Okay. So the cater the need of those who want to invest in the market and who have the idea to invest in the market. Okay. So they just the fund act as a bridge between them. Okay. And plus we have a regulatory imposition on the funds. Okay. Because the government need to ensure that the general, because see, let us understand, in things like mutual funds, hedge fund, a lot of, like especially in the mutual fund, a lot of public money is involved. Okay. So this has to be regulated. Okay. Like we have SEBI in India, we have SEC. Okay. All this time. So there are regulatory compliance also which comes with them. And where there is a compliance, there is a scope of chartered accountant. Okay. That's true. So yeah, you have that along with accounting also. There is a compliance part where the chartered accountant role comes in. Okay, so if someone is into like, okay, even if I don't like accounting, but I want to go in, I want to make my career into finance, into compliance, so they can, really cater this kind of clients also. Okay. Right. तो एक्चुअली एक क्वेश्चन और इसी कंटेक्स्ट में आता है कि जैसे हैज फंड है. सो अभी डी शो इज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन देयर कैंपस. Hmm. सो वो बेसिकली इज अ हैज फंड, डी शो. Hmm. सो दैट सो मोस्टली देयर एक्सपोज बिकॉज हमने देखा है डी शो जब भी आती है तो मोस्टली दे आस्क क्वेश्चंस ऑन डेरिवेटिव्स. Hmm. तो यही रीजन है ना उसका कि लाइक बिकॉज इट्स अ हेज फंड एंड देयर मेजर एक्सपोजर इज इन डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई दे primarily focus on this one. Yeah, exactly. Coming to derivatives, can someone give me certain examples of derivatives? Like how many types of derivatives are there? Certain, come on, finance guys. Derivatives can be forward, Hmm. futures, and options. Okay. Anything else? Swaps. Exactly, Shiva. Right. Yes. Yes. Good answer, Anshul and Shiva. Yeah. Now, how are these all different from each other? Okay. So that is what, an investment manager thrives into that. Okay, let me analyze. Do I need to make a forward contract? Do I need to make a future contract? Do I need to go into options? Do I need to carry with the swaps? Okay. So these are certain terms which during the interview, this we expect, as a technical interviewer, that okay, the interviewer should be knowing about this basic terms so that they can make accounting, they can go into financial reporting of this kind of things. Okay. So make sure if you guys want to come into this field, get your basics right with regard to this term. And this is nothing else but I guess AFM में सर ये सब होता है, right? See, Correct. finance, derivatives, forex accountings, and all those things. Okay. Yes. So just guys need to just brush up your concepts. That's it. लेकिन वो ऐसा होता है कि एक ही सब्जेक्ट में इतना Hmm. सारा स्टफिंग होता है कि समझ नहीं आता क्या पढ़े क्या छोड़ दें. Exactly. वो ग्रुप वालों को तो क्या ही बोले फिर अपन. हाँ. तो वो एक ही अभी एमबीए में ये ठीक रहता है कि वो डेरिवेटिव अलग कर देते हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट अलग कर देते हैं, सब सब्जेक्ट्स अलग अलग है. Hmm. Okay, superb. So I think broadly uh, the things are clear. Now, as I think अब आप लोगों की कोई questions हो तो बताएं. Otherwise, I think uh, top we will ask you top three questions. So anyone who those who have understood all this, right?
और थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी चेक हो जाएगा। तो टॉप 3 क्वेश्चंस अब आप लोगों से पूछ लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप क्वेश्चन पूछ लो, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है, राइट? सो यस। Career growth, they have asked, like I guess Shiva and Vishal asked about the career growth in हाँ। this domain. So, guys, trust me, I have a very close friend who is directly into staffing with the, CFO level of Deloitte. Okay, so we were having a recent, conversation on Sunday. Guys must be aware about there are like multiple big six, big four, like they are coming into upcoming into Indore or Central India market. Okay. So, and in Central India, I guess Indore is their topmost, priority because they are getting a really good talent. Okay, here. So, talking about career in this is that first I've already mentioned about the incline towards India rather than China from the investors of global like Europe, US. Secondly, in India, what it is happening is there, the tier one cities has, see, this kind of industry, what we are talking about financial reporting, there are two major costs of these industries. Okay. First is with regard to real estate, that is rental cost. Okay. Secondly, with regard to talent, that is your HR cost or salaries of their employees. Okay. And they are primarily targeting tier 2 cities for this because the cities like Bangalore, Mumbai, Delhi, Kolkata, okay, so they don't have that kind of, now bandwidth to, raise their and adjust their to reduce their cost. Okay. So that's why tier 2 cities are one of the favorite now for this kind of big six, big 10 domain of our accounting. Okay. So yeah, definitely there is a lot of scope and the business coming into India is, trust me, really huge. That's something wonderful, right? Those who are, so that's what, like, जो जिनको और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऐसी प्रोफाइल है कि यू आर फ्लेक्सिबल टू मूव टू एनी सिटी, tier 2 ऑल्सो, एंड इफ यू वांट टू गो इनटू मेट्रोज और सेमी मेट्रोज, तो आपको दोनों जगह का इसका, और जैसे कि काम आ रहा है, तो आप समझ ही सकते हो कि ग्रोथ तो इसके अंदर ट्रेमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। सीधे सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के दरवाजे खोलते हैं इसके बाद सीधे। लेकिन यहाँ से हम्म। हाँ, ये भी आई थिंक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सबके माइंड में कि ये जो रिपोर्टिंग वाला रोल है, रिपोर्टिंग से फिर उस साइड जाने का मौका मिलता है क्या, कि मतलब हम फ्रंट एंड पे चले जाए, या या सर, वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती? नहीं, डेफिनेटली सर स्कोप है ना, बट यू नीड टू स्पेंड अ गुड amount of time, quality years in the back end office also, so that you just get to know about the terminologies and that thing. Front end पे mostly is the work about pitching, okay, business लेके आना और client के साथ deal करना, ये चीजें हैं। okay, हम्म। so back end में जब हमें as a manager, I would say GT, जब हमें opportunity मिलती है to connect with the client. Okay, so we हम्म। get to know about the mindset of a client while even though we are preparing, financials of them. हम्म। But what is their thinking behind, making an investments, how they run their business? ये चीजें बैक एंड पे रह के मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बेटर हम समझ पाते हैं बिकॉज वी आर मोर इनटू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग. सो हाउ डज हम्म। देयर बिजनेस वर्क? ओके. See, we are having the entire, income statement balance sheet. We know that this is the major source of their revenue. Okay. So this is what the business is focusing on. Okay. This is their asset class in which they are investing. Okay. So this is what currently running in the market. Okay. हम्म। So you get to know the business idea, mind business of the client. So ये चीजें फिर बाद में जब आप फ्रंट एंड पे जाते हैं तो ये चीजें बहुत हेल्प होती है. राइट। ओके, 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 सुपर। सो any thing that if you people have apart from career, right? Okay, what is the pay, right? सीधी बात कर दी इन्होंने। Yes, कि अगला सर, ये सब करियर अपॉर्चुनिटी तो ठीक है, ये बता दो कि इन पे एंड कितना कितना में? आएगा. खर्चे बहुत है हमारे. No, no, pay is really good. I would say after a certain point when you go top of the management scale, okay, then you get, फिर आप क्या होता है कि जैसे आप क्लाइंट लेके आते हो तो क्लाइंट के रेवेन्यू में भी आपका शेयर होता है. Okay, so you हम्म। go with your client. Okay, so this is that kind of field. Okay.
ओके, तो देखो ये डिपेंड करता है। अभी आपका जो क्वेश्चन है वो एज अ फ्रेशर है, आप एमबीए फ्रेशर हो या सीए फ्रेशर हो, वो डिपेंड करेगा और कौन सी सिटी में आप करियर स्टार्ट कर रहे हो उस पर भी थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो जो सीटीसी वाली जो बात है, डेफिनेटली वो हम लोग जब सेशन में रहेंगे तो थोड़ा सा और वी विल टॉक इन डिटेल। बट यस डेफिनेटली ये हर तरह के रोल्स होते हैं। ये आपको इंडस्ट्री के हिसाब से आपको इंडस्ट्री के ऊपर ही मिलता है। इसके अंदर एक चीज मैंने जो नोटिस करी है, जो इंडस्ट्री पे कर रही है एवरेज और अबव एवरेज ही इसमें मिलता है। और बस इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें है प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं आगे बढ़ने के। ओके, सो अब इसमें से कुछ, इफ यू कैन गिव देम सम टिप्स टू, लाइक इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर hedge fund रिपोर्टिंग और म्यूचुअल फंड रिपोर्टिंग, fund accounting, so how what are the first 2 3 steps that they should follow to get a Okay, hold of first of all, I would say there are like, see, based on our assessment, let me tell you how we assess a candidate, okay, when mm-hmm. we are hiring them for duty, okay. So there are four primary scales on which we assess is, first of all, their accounting knowledge, because definitely we are an accounting firm, so we will be checking accounting knowledge. Secondly, industry specific, that is our capital market knowledge. Okay, how well they know about the capital market. Like we generally talked about hedge funds, mutual funds, private equity, NAV, net asset value. Okay, how it is calculated, all those things, derivatives, accredited investors, this kind of terms. Thirdly, the primarily working, if you are working about talking about ground working, it happens on the Excel sheets. Okay, एज एज अ अकाउंटेंट आई गेस एक्सेल आपका कभी पीछा छोड़ ही नहीं सकती। ओके Mm-hmm. अगर हम इस फील्ड में आए हैं सो एक्सेल के साथ हम आए हैं और हम एक्सेल के साथ ही जाएंगे। ठीक है सो मेक श्योर यू आर वेल वर्स इन एक्सेल। ओके आजकल तो लाइक इन द बिग सिटीज देर आर लाइक एआई इनकॉर्पोरेट होने लग गया सर। उसके साथ में हाँ, चार्ट प्रिपेयर हो जाते हैं ये सारी चीजें, बिकॉज आजकल बहुत ट्रेंडिंग है एआई आजकल एआई हर ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप एआई लेकिन इनकॉर्पोरेट कर लो। मैंने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करी है। अभी मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स हम्म, ली थी, फाइनेंशियल मॉडलिंग की भी लिया था, एक्सेल का भी हुआ था। तो एक जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि जैसे होता है ना कि पहले के लोगों को मेंटल कैलकुलेशंस आते थे, तो आते थे। अभी उनको कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़ता था। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटर यूज करा। अभी जो मैं देख रहा हूँ उसमें पीपल आर डायरेक्टली, मतलब मैं उनको बोलता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। हम्म। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जो मेथड है, दे आर नॉट गेटिंग दैट वन। वो फिर सीधा एआई यूज कर लेते हैं ये कि इतना प्रेजेंट वैल्यू है। अब वो कैसे आया है वो नहीं पता है। बट डू यू थिंक दैट ये सही है? मतलब लॉजिक तो पता होना चाहिए ना। डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास आपके आप डिपेंडेंसी मशीन के ऊपर क्यों क्रिएट करो, उसमें आपका एसेट हम्म। क्या है। करेक्ट। है। अगर तो ऐसा ही आपके एआई के ऊपर ही है सो फिर वो बात है कि फिर आपकी जॉब सिक्योरिटी कभी नहीं रहेगी। द एआई हाँ डेफिनेटली रिप्लेस यू, विच इज व्हाट मोस्ट ऑफ द गाइज हैव जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं उनको कई बार लगता है कि यार हमारा करियर एआई खा जाएगा, ये खा जाएगा। ऐसा हाँ हाँ if you are हाँ। talented there are there is always a human intervention which is required। okay आप अकाउंट्स नहीं बना सकते बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिकॉज देर आर सर्टन डिसीजन विच नीड टू बी टेकन केयर। ओके इवन हाँ हर एक फंड एक जैसा नहीं होता है, हर फंड की अकाउंटिंग जैसी नहीं होती है आपको। और चलो अकाउंटिंग मैंने एक जैसी कर भी ली, लेकिन अगर मान लो लाइक रिसेंटली एग्जाम्पल कुछ डिस्क्लोजर चेंज हो जाएगा। लाइक रिसेंटली वी हैव हर्ड अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी तो सैंक्शंस लग गए थे रशिया के ऊपर। ओके हम्म तो उनके हमने डिस्क्लोजर्स अलग से दिए थे, बिकॉज देर आर मैनी कंट्रीज हु हैव पुट सैंक्शंस ऑन द रशियन। तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट जिन फंड्स ने रशियन सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो उसका हमें डिस्क्लोजर सेपरेटली करके देना पड़ा था, दैट दिस आर लाइक दिस particular fund has invested into Russian securities, and because of this geopolitical risk, because see there is a risk disclosure also, okay, which comes with this। ओके सो उस हम्म रिस्क डिस्क्लोजर में हमें वो जियोपॉलिटिकल प्रेशर का टेंशन का भी हमें रिस्क डिस्क्लोजर देना पड़ा था हमारे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। ओके हम्म सो दिस इज दैट काइंड ऑफ फील्ड, ओके, जहाँ पे आपका अकाउंटिंग के अंदर भी आपका ये सारा रिस्क रिस्क सब चीजें ये जनरली आप यू कांट एक्सपेक्ट एआई टू केटर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये चीज हम रिव्यू में ही हमें कैटर करनी पड़ती है। हम्म। नहीं नहीं, सही है। दैट इज, तो यही बात है कि आप ऑटोमेशन, लेकिन ऑटोमेशन में भी लाइक एक्सेल तो आना चाहिए।
एक्सेल मतलब इज वो एआई बेसिक। वाला एक्सेल जो आप सीख रहे हो, ये बाकी सभी लोग, कि वो मुझे लगता है कि उसमें खुद का फंडामेंटल भी स्ट्रांग रखो, प्योरली ये ना करो कि कंप्यूट दिस फॉर मी, ये तो आपने कमांड ऐसे ही दे दिया, बट जो बेसिक कमांड्स हैं, वी लुकअप कैसे लगाना है, ओके, वो यू शुड नो दैट, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि वो बात सही बोल रहे हो आप कि एआई का ऐसा ट्रेंड चल रहा है ना, तो एवरीवन इज लुकिंग फॉर कि हम एक्सेल इंटीग्रेटेड एआई वाला कैसे सीखें। तो हम्म। उसमें क्या सीखना है आपको, तो केवल बोलना है उसको, राइट, कि ये कर दो। सर बट हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग, हमने ऐसे ऐसे भी मॉडल्स प्रिपेयर करे कि आप F2 दबाते हैं तो इतना 4 4 लाइन के फॉर्मूलेज रहते हैं उसके अंदर, कहाँ से हाँ। डेटा फ्लो हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, इतनी लिंकेज। आप एक बार में ऐसा होता है, आप 4 शीट से अंदर आप इनपुट्स डेटा पॉपुलेट करते हैं, और एक्सेल इज ऑल टुगेदर सब लिंकेज होकर डेटा अपडेट होते हैं, वो मैच हो जाता है। ओके, सो वो एसेंस है एक्सेल का। ओके, हम्म। आपको इफ, सम इफ्स, ओके, पिवट टेबल, वी लुकअप, एक्स लुकअप, ओके, ये सारे फॉर्मूले ट्रस्ट में, चाहे एआई आ जाए, चाहे जितना मर्जी, चाहे रोबोट बैठ के काम करा लो। ओके, हम्म। बट आप अगर अकाउंटिंग फील्ड में हैं, सो दिस आर सर्टन बेसिक एक्सेल बेसिक्स। टर्मिनोलॉजीज विच यू नीड टू केटर। करेक्ट, करेक्ट। So this is the third thing that you should remember. The so we were talking about कि क्या चार expectations हैं. So this is the third expectation that Excel फर्स्ट आपको आना चाहिए. फर्स्ट और इज fourth, अकाउंटिंग, सेकंड yes, इज first. कैपिटल मार्केट, थर्ड इज एक्सेल, ओके, फोर्थ वन इज कम्युनिकेशन स्किल्स। Hmm. guys really you need to like, sorry to say but जो recent talent आ रहा है सर, कि आई वुड से कि ऐसा नहीं हो रहा है कि यार, देर इज अ रीजन वाई इंस्टीट्यूट फेल्ट अ नीड ऑफ लाइक जीएमसीएस कराए। एमबीएस के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी मॉक इंटरव्यूज होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इतना वर्क होता है। ओके, एंड एज पर आवर recent hiring, what we are saying that guys are well versed in these three roles like accounting, capital market, Excel, but their communication is lagging behind. Understand, guys, we need to, communicate with global clients here. Okay, Hmm. your client may be sitting in, Boston, USA. Your client may be sitting in Ireland, like, so you need to communicate with them and you need to well verse in your communication. Okay. सर मैं देख रहा हूँ को पायलट आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट का, तो लोगों ने मेल लिखना छोड़ छोड़ दिया है सर, स्टेटस Hmm. मेल के लिए को पायलट यूज करते हैं। प्लीज इतनी डिपेंडेंसी मत करो कि हम एक मेल तक नहीं ड्राफ्ट कर पाए। जो हाँ, हमने 8 घंटे बैठकर काम किया है उसका हम मेल, स्टेटस मेल नहीं लिख पा रहे हैं। हाँ। जेन्युइनली सर, दिस काइंड ऑफ इश्यूज इज व्हाट आई एम वो सीइंग होगा, वो डेली होगा, मुझे लग बेसिस। रहा है एआई में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा या कि सो पीपल मेक श्योर। स्टॉप वर्किंग। लेकिन जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश कम्युनिकेशन, राइट, इंग्लिश इंग्लिश फ्लुएंसी। कम्युनिकेशन। तो ये या तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, है ना? या या ओके, ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड ये, मतलब यहाँ पर वो बात नहीं है जो हम लोगों ने एक बार क्लास में डिस्कस करी थी कि इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर इन इंग्लिश, देन यू कैन गिव अ मिक्स आंसर, बिकॉज देयर एक्सपेक्टेशन इज नॉट दैट। देयर एक्सपेक्टेशन इज प्योरली कि अब भाई आपको फॉरेन क्लाइंट से ही बात करनी है, तो इंग्लिश फ्लुएंसी इज अ मस्ट थिंग हियर, राइट। एक इंडियन कंपनी अगर आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि आप फंड अकाउंटिंग में फॉरेन क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हो, तो वहां पर ये रहेगा, ठीक है ना? Yeah, definitely, Vishal, I would agree with your point, but I would say that there should not be dependency on AI. हम्म। दैट इज, यू शुड नो दैट व्हाट एआई इज टाइपिंग, ऐसा ना हो कि हम्म। एआई कुछ टाइप करके कुछ भेज दे, कुछ राइट, टाइप आप करते हैं, पता ही कुछ नहीं का कुछ हो चलेगा। गया है, एटलीस्ट सेल्फ रिव्यू करो एक बार AI हाँ। का टर्म देख रहे हो तो, ऐसा। ओके, ओके, फैंटास्टिक, ओके, सो ग्रेट, आई एडिंग थिंक। ऑन सर, थोड़ा सा एक पॉइंट में इस चीज पे यस, ये प्लीज, मैं प्लीज। ऐड करूंगा सर। देर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज इन आवर हम्म। प्रोफाइल व्हाट वी आर हम्म। हैविंग। ओके, सो वी हम्म। नीड टू मेक श्योर कि ऐसा नहीं हो कि आप कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा आप मेल में करो, आप उसको सेंड कर दो जो कि उस पर्सन वाज नॉट सपोज टू गेन दैट इंफॉर्मेशन। ओके, बिकॉज हम्म। हम जो काम करते हैं, हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं। आप समझो आपके पास, मान लो लाइक कमिंग बैक टू रिलायंस। ओके, अगर आप रिलायंस का आप फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, आपने एक बार देखा होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, एनुअल रिजल्ट्स आते हैं और मार्केट की काया पलट जाती है। ओके, हाँ, वी हाँ। आर एज एन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गाइज, वी हैव द फर्स्ट एक्सेस टू दोज प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ओके, एंड आपका एक कोई सा भी गलत मेल, यू नो कैन हम्म। लीक दोस डेटा इनटू द ओपन मार्केट। ओके, सो दैट इज हाउ सेंसिटिव दिस डेटा आर। ओके, दिस इज सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
Yeah, so make sure because we are the guys who are having the first access of the price sensitive information as हाँ. accountants, as the financial reporters, as an auditors. Okay, so make sure that we are, really due diligent with regard to the data with what we are sharing. Okay, as we are saying, the upcoming war जो होने वाली है वो ग्राउंड पे नहीं होगी, वो बम से नहीं होगी, वो डेटा की होगी. ओके, हम्म. सो डेटा डेटा इतना सेंसिटिव है फॉर द. हाँ. एक्चुअली जो जिन लोगों ने इंटरव्यूज की, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में बातें करी थी, और अगर आप लोगों ने सही चीज को सही टाइम पे, व्हाट ही इज सेइंग इज अ कंप्लीट इंटरव्यू टिप्स फॉर यू, राइट? अगर आप लोग सही तरीके से जो बातों को यूज कर लोगे तो यू विल क्रैक इंटरव्यू लाइक एनीथिंग. अभी ये जो बात है जो इन्होंने बोली है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी की, आपको पता है कि इंटरव्यू आपका टेक्निकली ठीक है जैसा भी जा रहा है, लेकिन जिसने ये बात बोल दी कि अगर उन्होंने पूछा व्हाई शुड वी हायर यू एंड व्हाट यू नो अबाउट द इंडस्ट्री, ये कितनी क्रूशियल बात है. अगर आपने नोट कर ली और ये बोल दी उनको कि आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी डेटा सेंसिटिव इंडस्ट्री and confidentiality is the most important thing, and I believe that I have that understanding of keeping things confidential. कितना इंप्रेस होंगे आपसे, आप सोचो, राइट? क्योंकि ये एक उनकी बेसिक नेसेसिटी है, जितनी टेक्निकल नेसेसिटी उतनी यही नेसेसिटी. और आपने वो बात सामने से आके बोली कि हम समझते हैं वो बात को, तो दे विल डेफिनेटली बिलीव कि हाँ ये एक्चुअली इस इंडस्ट्री को समझते हैं, not only technically but the crux of core of this particular industry, right? तो ये बातें अब आपको यहाँ से पिक करनी है इस डिस्कशन से. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट conversation and great insights, JJ, from your side. I'm definitely very happy to see you growing Definitely. again, like very very happy for you, and the kind of insights that you've given is really fantastic. Definitely. Anytime, sir. So, before we say goodbye to JJ, yes, I want thumbs up from all of you, right, for this fantastic session. Is to those who can turn on their videos, अच्छी बात है. Otherwise, you know how to thumbs up, right, in Zoom, right? A quick thumbs up from everyone. Yes, this is a thumbs up from my side. Yes, Thank you, big sir. thumbs up. Yes, everyone. All right, great, 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 great. Okay, so superb. And definitely, if you people are really keen about joining fund reporting and fund accounting, yes, do let me know. And certainly, if there are any positions available, we can try to take it forward. All right. Once again, thanks, JJ. And Thank you so much. yes, I'll connect with you. Yeah. Thank you so much, sir. Okay. Bye Thank you, bye. guys. All the very best, guys, for your career. Thanks on behalf of everyone. All right. So great. I think आप लोगों को एक broader clarity आई है. Yes, everyone. Yeah. Okay, superb. तो अब ये वाला जो इसी डिस्कशन को हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर और डिस्कस कर लेते हैं, राइट? ताकि ये जो फंड अकाउंटिंग वाला डिस्कशन है ये कंप्लीट हो जाए. There are, of course, people who have got opportunity in D also. ठीक है, तो देखो अब मैं अपना पर्सपेक्टिव भी आपको बता देता हूँ. वैसे तो आपको 90% चीजें क्लियर है. ये जो रोल्स हैं, ये इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी कंपनीज के अंदर आ रही है. ओके, बहुत सारी कंपनीज हैं, कैंपस ऑफ कैंपस ये हायर करते हैं, एंड दे आर पेइंग ऑल्सो वेल. तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है. आपको बस इसके अंदर समझना है कि हमको क्या प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो जस्ट फोकस ऑन दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू इन दिस पर्टिकुलर सेशन. ठीक है, तो वी विल टेक हाफ एन आवर मोर, राइट? आधा घंटा और लेंगे और आज इस सेशन को पूरा एंड तक कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का, और उसके बाद जस्ट नोट डाउन द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देर आस्किंग.